India, world's fifth largest agricultural producing country, and a country whose economy is deeply entwined with agriculture. During independence, 70% of our workforce were directly involved in agricultural activities and contributed to 54% of our economy. But if we look at the scenario today, it is very surprising as only 55% of India's population is directly involved in agriculture, and this contributes only to 17% of our national income. यह आंकड़े अलग इसीलिए है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ऐसी स्थिति में मौजूदा कानूनों के अंतर्गत किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहे, जिसमें ज्यादातर पैसे मिडिलमैन दबोच लेते हैं और हमारे किसानों को आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। हमारे देश में किसानों की व्यथा आजादी से पहले से ही है। पहले भी उन्हें जमींदारों के हाथों कष्ट का सामना करना पड़ता था। इसीलिए आजाद भारत में उनके हक को बचाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट अर्थात एपीएमसी एक्ट की स्थापना की गई थी। Just like any other act, this act also had its merits and demerits. The merits were that this helped the government control prices and inflation of agricultural goods and products. At the same time, it helped the government to provide minimum selling price to the farmers, which enabled and equipped farmers to get good prices for their agricultural products. The downside of this entire act was that under this act, the systemic corruption was increasing day by day, which led to exploitation of the farmers. The one thing that this act was created to prevent in the very first place was happening now right under the nose of this act: exploitation of farmers. Despite having so much fertile land and half of its population directly involved in the agricultural sector, India could not compete with other global players without timely and necessary reforms. This prompted the Narendra Modi government to bring in the 3 agriculture bills in order to reform the agricultural sector. These farmer bills have been the talk of the nation, leading to protests by farmers across states and aggressive clashes in parliament. What are these bills and why is there a row on them? द 21st टॉक्स के इस नए एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। The 3 agriculture bills passed in the parliament are the Farmers Produce Trade and Commerce Ordinance, the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, and the Essential Commodities Amendment Ordinance. पहला ऑर्डिनेंस जो है वो उन्हें अपनी उपज चाहे तो प्राइवेट कंपनियों को बेच सकती है। अभी तक उनके पास एपीएमसी मंडी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरा ऑर्डिनेंस जो है वो उन्हें प्राइवेट कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनके लिए खेती करने का हक दिलाती। The third and final ordinance removes certain commodities from the essential commodities list, a list that prevents hoarding of such essential commodities. The commodities removed from this list are onion, potato, cereals, pulses and edible oils. सबसे पहले अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये ऑर्डिनेंस हमें विश्व के अन्य देशों के साथ कृषि क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने में सहायता प्रदान करता है और समय के मांग के अनुसार यह किसानों को उनकी उपज उनके मापदंडों के अनुसार या तो प्राइवेट कंपनियों में या फिर एपीएमसी मार्केट में बीच बेचने का चुनाव प्रदान करता है। The contractual element of the ordinances allow the farmers to get a stable source of remuneration and income. It also allows privatization, which will eventually lead to the modernization of farming practices in India. And this would bring India par with other global agricultural producers and fully utilize the potential of commercial farming. This bill would allow the farmers to sell their produce to private individuals or private companies by bypassing the middlemen at APMC markets. This in turn would provide them with more profits for their produce and not be dependent on the government or a middleman for the remuneration or a stable income. यह ऑर्डिनेंस का एक और काम यह भी है कि एपीएमसी सिस्टम में किसानों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और उन्हें अपने उपज के लिए अच्छे दाम पहुंचाना। But there has been a lot of controversy surrounding the passing of these 3 ordinances in the Lok Sabha and Rajya Sabha. And surprisingly, this time BJP's allies are also against the fence on this row, namely Shiromani Akali Dal, who has been vocally opposing the passing of these 3 ordinances. Now the row grew up so much so between these parties that Shiromani Akali Dal ultimately had to leave the NDA, and Harsimrat Kaur Badal, the union minister from the Shiromani Akali Dal in the Modi cabinet, also had to resign from her post in protest.
विवाद का कारण ये बना कि इस ऑर्डिनेंस में कहीं भी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी का उल्लेख नहीं था। तो बहुत सारे किसानों को ऐसा लगने लगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उनके माल का सही दाम नहीं देंगे और उनका हालत पहले वैसे हो जाएगा जैसे जमींदारों के जमाने में हुआ करता था। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे ही शोषण जमींदार उन किसानों का करते थे, अब वही स्थिति वापस आने वाली है प्राइवेट कंपनियों के साथ। किसानों को यह डर है कि प्राइवेट कंपनियां उनकी आत्मनिर्भरता को छीन कर उन्हें सिर्फ कैश क्रॉप की खेती करवाने के लिए मजबूर कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो किसान अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बन के रह जाएगा। Another troubling thought is that the ordinance removes certain commodities out of the essential commodities list. Now what this does is that it essentially legalizes hoarding of these goods in large quantities, namely onion, potato, edible oil, cereals and pulses. So what will happen now is that since private companies will directly dictate to the farmers on what to produce and how to produce, they can control the entire supply chain. They can stockpile huge quantities of these goods which are no longer in the essential commodities list, which earlier used to prevent their hoarding, but now they can be stockpiled in huge quantities. Now this can create huge supply and demand deficits in the market, artificially generated deficits, and this will lead to inflation and rise in price of these products. Well, this isn't any good news for the common man and nor is it for the farmers. एक हाथ में जहां कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन की भी उतनी आवश्यकता है और एक हाथ पर जो किसानों के हक है उनका बचना भी आवश्यक है। इसमें फिर से एक बार मोदी सरकार ने अपनी खराब कम्युनिकेशन के नाकामयाबी को दर्शा दिया। The opposition was rattled by the way these bills were passed in the parliament without the due process being followed and no debates and discussions being taken place regarding these bills. अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार रिफॉर्म्स तो लाना चाहती है, लेकिन डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस के मामले में हमेशा पीछे रह जाती है। ऐसा ही कुछ हमने सीएए और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशंस के वक्त भी देखा था, जब जानकारी ना पहुंचने की वजह से लोगों में डर बैठ गया था। Although the ordinances and bills are passed for the welfare of the people, it is very important for us to take a step back and look closely on whether which people are going to actually derive benefits from these bills. Is it going to benefit the farmers or is it going to benefit the private companies? किसानों की चिंता भी जायज है। आखिर उन्हें उपज का सही दाम तो मिलना ही चाहिए, जो कि बहुत सारे राज्य में, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में जहां से भारत की अधिकतर कृषि होती है, वहां के किसानों को एमएसपी का फायदा होता था। अब डर यही है कि प्राइवेट कंपनीज के कारण इनका जो एपीएमसी मार्केट है उसका अस्तित्व और महत्व दोनों कम हो जाएगा और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक मोनोपोली बना देंगे और किसानों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। Privatization is indeed necessary, but what is important now is the prevention of exploitation of the farmer. The government needs to provide clarifications and assurances to the beneficiaries and the stakeholders of this bill. However, the government has failed to do so, and this could lead to spreading of misinformation and further unrest in the country. पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं दोस्तों, और हम 21st टॉक्स में आपको सारे फैक्ट्स समझाना चाहते हैं। आइए इसके दूसरे पहलू को भी देखें। Another funny thing is that the opposition is once again notorious and at large again. They are trying to instill fear in the hearts of the farmers without actually explaining to them why these ordinances and bills are wrong for them. Well, the Congress party and the opposition is being hypocritical once again, as they had also mentioned something around the lines of these ordinances in their election manifestos for years. But as usual, when Modi government goes on to complete their promises in the manifesto, the Congress has a sudden conscience which speaks to them and tells them that everything that this government does is wrong. And which is why they have come out now again and they are shouting against these bills. However, they are not really talking on the major core issues on why these bills are wrong, which is the principal fault of the opposition in this country from the past few years. अगर सच कहा जाए तो एक बार फिर विपक्ष सही मुद्दे को गलत तरीके से उठाने में कामयाब रहा। एक तरफ विपक्ष खुद कहता है कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए और दूसरी तरफ नारेबाजी कर, धरनाबाजी कर सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने देते। पानी तो सड़कों पर तब गया जब कुछ एमपीओ ने उपसभापति महोदय के सामने आकर जो सदन की गरिमा होती है उसका उल्लंघन किया ही और साथ में जो रूल बुक्स है उसको फाड़ कर उपसभापति महोदय के ऊपर फेंकने लगे और जो माइक था उनका वो भी तोड़ दिया गया। Chairman of the Rajya Sabha, Vice President Venkaiah Naidu, had to suspend 8 MPs from Congress, TMC and CPIM for their unruly behavior, which sparked fire on the Rajya Sabha's floor. This led to the eventual abandonment and the adjourning of the session 1 week in advance.
अब समय आ गया है दोस्तों कि हमारे नेता समझे कि ऐसी नौटंकी, नारेबाजी और भाषणबाजी से वो हमें उल्लू नहीं बना सकते। जिन काम के लिए लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है, उन कर्तव्यों का निर्वहन उन्हें संपन्न पूर्वक करना ही होगा। This has been a tough time for the Modi government, not just because of the pandemic, but for the overall process on how the government is working. Another major blow to the BJP this week was that the Shiromani Akali Dal left the National Democratic Alliance, the alliance with which help the BJP government has come to power. Although the BJP enjoys a comfortable majority in Lok Sabha and a newfound majority in Rajya Sabha, I think the BJP must understand that they cannot go ahead and unilaterally pass bills without taking consensus of all the stakeholders and other parties in the Lok Sabha and in the country who are concerned with that bill. I think Prime Minister Narendra Modi ji should understand that Sabka Saath Sabka Vikas is not just a slogan but should also have some meaning in its essence. And when you do not take everybody together for everybody's development by not engaging into a healthy dialogue, I don't think such bills or ordinances will ever be able to be completely helpful to the people they are intended for. आशा करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको इस बिल के बारे में समझने में मदद आया होगा। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए द 21st टॉक्स और हमेशा की तरह कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स। मैं केशव झा, मुझे विदा दीजिए, अब हम बोलेंगे।